Well, friends, let's start. Just to have a quick wrap of what we talked yesterday, we talked mainly on caste. In the caste, we talked caste, endogamy, gotra, exogamy. Endogamy within the caste, exogamy outside gotra, food and marriage, commensality and marriage. Then to substantiate our talk, we gave two great sons of the soil. One, Baba Saheb, one, Bapu. Baba Saheb was for annihilation of caste, destruction of caste. Said priesthood should not be restricted to the Brahmins, even Shudras and Dalits should enter temple and go for worship. And don't believe in religious scriptures. These religious scriptures are nothing but Brahminic interpretation. Manuspriti, Manusmriti, and Manubad are nothing but all rubbish interpretation of Brahmins of the society. And the third, he said, I was born as a Hindu, but I will never die as a Hindu. In 19 some odd word, you need not remember those years and other things. He just, along with a big followers, went for a conversion. But Gandhi was a mass leader. He said, caste is so well fabricated in the social fabric of India that trying to destroy the caste system in Indian society will simply destroy the society itself. Rather, we should go within the tradition and try to purify the tradition. Purification of tradition from tradition. That is, the worst part of caste is untouchability. So, untouchability needs to be abrogated, abdicated, eliminated, and others should be emancipated. Dalits should be emancipated. And he himself went and cleaned toilets and other things. Okay, that's between caste, what I say, endogamy, exogamy, forecast, against caste. Those who say forecast, they say this caste is a kind of a division of labor, caste is a kind of a thing which you need to look from the Indian angle, not with Western lens, all these things. And the person who studied was Louis Dumont. He said purity and pollution. He even argued that in democracy also, there is more exploitation than this caste system. Fine. Then we talked of, after caste, we talked of what? Huh? Re- Did we talk of religion? Religion we are going to talk now. हाँ, class. Caste के बाद हमने class बोला. We talked of agriculture class, talked of industrial class, then we talked of a special class, middle class, because middle class often comes in the question. Middle class is there in agriculture, middle class is there in industry, but we separately took it up because a question comes on middle class. Because middle class is a class which is the biggest class, a sandwich class between the working class and the bourgeois and the proletariat ke beecho beach. There is a bourgeois, you understand? The industrialist, Adani, Ambani, Tata, Birla are the bourgeois class. Bourgeois means they are the owners of the factories, properties. They don't do much. They have these owners and they only exploit. And the worker class, they work for them. They have nothing with them except their labor. They sell their labor and earn their livelihood. And the bourgeois, they don't do anything. It is Karl Marx's view. Okay, that is middle class, industrial class, agricultural class. In agricultural caste, we gave one exploiter and one exploited. The moment it comes a question of
class, you give your viewpoint. Exploiter, exploit it. Rich peasant, poor peasant, laborers, like this. Now, uh, after class, we'll come to now religion. Before jumping into religion, I can jump onto religion and say, oh, the dharma, artha, kama, moksha, dharma khetre, kurukshetre, shamovita, jujutsavu. I can also say अलेफ लाम मीम जालिकाल किताबु ला रैब फीह, ये कहाँ से आया, किसने कहा, इसकी अहमियत क्या है, एक ही ओंकार सतनाम कर्ता पूरक, बोलते जाओ. This will never come in your question. That sort of a thing will not come into your question. Your questions are related to religion and the harmonious living, coexistence, pluralism. All these things are the part of religion, which question comes. For that, you need to know the origin of religion. Regarding origin of religion, there was a great French philosopher. He studied original Aborigine tribes. What exactly they do? He found this Aborigine tribes, primitive tribes, they are wanderers. They keep on wandering here and there. When they find a particular group of people again with them, they feel very happy. Who doesn't like to interact? You find somebody, you interact, you exchange your ideas, you hug, you love, they feel happy. And they think, why all in a sudden happiness? Maybe they saw a tree and they think, because of this tree, we got this happiness. Sometimes they can find a big stone. In the presence of that stone, they met some people and they started feeling happy. That is another group. And sometimes when they go for boating, for catching fish, all on a sudden they get scared. And they get scared and say, what to do? Water is so dangerous. They start saying, oh, water, please cool down, please cool down. And while saying so, they found the water got cooled down. They could save their life and come back to the shore. All these things, happiness, joy, scares, getting scared, they started worshipping this tree. They started worshipping this stone. They started worshipping this water. This is nothing but animism, worshipping the nature. He studied Arunta tribes of Australia and saw the people at the what you call evolution stage, who are unlike the padhe likhe danishvar insan. They go for worship because of this reason. This worship, when you feel happy with a group of people in presence of a tree and thinking that this tree is the real God, actually his happiness is because he met few people. And this few people is nothing but society. Because he was interacting, our relationship was formed. So religion and society, according to Emil Durkheim, was synonymous. Religion is nothing but a society. And to enforce this, sometimes certain rituals are given. What kind of a rituals? Maybe they put a red color. Maybe they burn something, धुआं लगा देते हैं. Something do to enforce
that particular, that tree is the god. And over a period of time, this kind of a feeling gives rise to a kind of a religion. So religion has a joy component and religion has a fear component. Over a period of time, when people keep on developing from the primitive form, from the animistic form, they give a shape. Sometimes they don't give a shape. When such, he gave the term totems, sometimes some animals, sometimes some trees, sometimes some water, sometimes some stones, a religious form develops. Having understood this religious form, now we'll come to what exactly our concern is. Religion has historically influenced the Indian society on political, cultural, and economic level. Religion has influenced Indian society. Now to us, religion is a full-fledged form. It is influencing our politics. We, we, our political leaders are constructing temples. Political leaders, in the name of religion, are doing some social activities. It is becoming economy. I say it. You go to certain cities are developed. They are religious towns. Puri in Orissa is a religious town. Varanasi in UP is a religious town. Udupi in Karnataka is a religious town. There are many such. Nothing else but that temple or that mosque. Ajmer Sharif Dargah, that only that, nothing else. Whole economy revolves round Ajmer Sharif, be it a hotel, be it a rickshaw, be it a food stall, be it the beggars, all around that Ajmer Sharif Dargah, nothing else there. There is a sense of pride associated with countries' rich religious history. There is a sense of pride associated with, everybody feels proud of his religion. And if you don't feel proud of your religion, you'll be enforced to feel proud. Otherwise, some will say, क्या बोलते हैं आजकल? वही हो जाओगे. The moment you are not feeling proud, वो आपको कुछ ना कुछ बोल ही देंगे. And they will enforce it that you feel proud. Even if you don't feel proud, don't say against. Against कहने के लिए तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बनना पड़ेगा. He could dare to say, way back in 1930s, जिगर में दम होनी चाहिए वैसे बोलने के लिए. In India, religion is more publicly visible. In India, religion is more publicly visible than in the English-speaking European countries. कहाँ जाना है? अच्छा, आप जा रहे हैं माउंट आबू, वहां पे ना वो ब्रह्म कुमारी है. अरे यार, ब्रह्म कुमारी देखने जाएंगे क्या? माउंट आबू एक पहाड़ है, जंगल है, रिसोर्ट्स हैं. देयर आर मेनी थिंग्स ना. ब्रह्म कुमारी देखने जाना है. कहीं भी जाइए, आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की वो देखने जाना है. द टूरिज्म इन इंडिया सेंटर्स राउंड रिलीजियस प्लेसेस. अगर रिलीजियस प्लेस खास नहीं है, नहीं तो केदारनाथ कौन जाएगा? उस जंगल में कौन जाएगा? 18 किलोमीटर पैदल, 18 kilometers you have to trek.
बुजुर्ग तो जा नहीं पाएंगे। आजकल वो उड़ रहा है, खूब उड़ रहा है, पट 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 पट। इट्स अ ग्रेट नॉइज पोल्यूशन। In India, religion, they did not allow NTPC to go for hydro project there on the ground that it will be pollution. But today, if you go there, every 5 minutes there is a helicopter. Tap, 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 चल रहा है. It's completely polluted. This becomes evident when considering the numerous spaces that are thought to be sacred and holy. Most of the places become sacred and most of the places become holy. Such a big Ganga river. What a wonderful kind of a fish would have been there. In the hotel, there is no fish because it is sacred. अरे sacred है तो मछली खाओ ना यार, जम के मछली खाओ. Buddhists, they offer king size cigarette to God. Bengalis, they offer fish to God. These people, they don't take, so they don't give. And when we go there, it's a sacred place. You cannot take fish. अरे मुश्किल हो गया यार. इतना बढ़िया नदी दिख रहा है, इतना फर्स्ट क्लास मछली होगा, मगर मछली नहीं खा सकते. तो ऐसे यार यहाँ पे कोई नहीं मछली खाता है. बोले कि नहीं, यहाँ से आप ना वो बाईपास की तरफ चले जाओ, शायद मिल जाए. यार इतने छुपा के कौन क्या खाना है, कोई गुनाह थोड़ी ना है. This becomes evident when considering the numerous spaces that are thought to be sacred and holy. पवित्र. और होली का हिंदी क्या मुझे नहीं पता. व्हाट इज होली? और सैक्रेड? सैक्रेड पवित्र, और होली पता नहीं, छोड़ो, इंग्लिश में है. Now we need to concentrate on this. I collected specifically for you. There is an organization who does, it's US based organization. They does many types of research, and data is considered to be very authentic, particularly in the area of social research. PU, PEWU, PW, PU research. उनके 2020 का फाइंडिंग है, the religious scenario of India, and that should be your focus. There is a rich religious history visible, in architecture. All our architecture have a rich religious history. Temple, mosque, church, synagogue. Wherever you go, you will find the religious history. Sometimes you'll find the Mughal architecture. Sometimes you'll find Hindu architecture. I talked about it. Gothic, Gopuram, Chuda, Pagoda. Every has a different, distinct type of architecture. And those architecture are wonderful. Jains are different. If you go to Mount Abu, there's a temple. You'll find a different architecture. It's a combination of Hindu as well as that Gopuram. All together, it's a different type of architecture. And there are certain, all religion, not only Hindu, are misogynic. You understand what is misogynic? MYSENIC. Misogynic. Something goes against women. All religion. We were entering. It's well written in that Jain temple that we don't search, but we say, if you violate, something wrong will happen in your life. Kya? If any lady is menstruating, she should not enter this Jain temple. I asked my wife, you are menstruating? She said, no. Manuela asked daughter. She asked my daughter.
She said, yes, so what? I will enter. No, no, please. I'm scared at my heart. You please go. It's written, कुछ नुकसान हो जाएगा तब बोलेंगे something wrong we had done. She came out and after that she was telling, Papa, you are so outdated, so backward, so misogynist, so this. मैं क्या करूं? मैं एक बाप हूं, मैं डरपोक हूं, कायर हूं, मेरा दिल बहुत कमजोर है. But anyway, all religions are misogynic, be it Hindu, be it Islam, be it Buddhist, be it Jains, be it any other religion. And there is a huge lot of trouble related to South Kerala का वो temple क्या है? Sabrimala. Those are huge. After 75 years of independence, Indians feel their country has lived up to its post-independence ideals. A society where followers of many religions can live and practice freely. This is the feeling of uh, Indians, which Pew Research found. उन्हें मिला after 75 years of independence, Indians feel that their country has lived up to one of its post-independence ideal that all religion will coexist mutually, peacefully together. And we are doing that. That was the viewpoint. When they did a survey, it came out. They also found out the reality, what the reality is. What did they find? I repeat again, after 75 years of independence, Indians feel their country has lived up to one of the post-independence ideal, that is a society where followers of many religions can live and practice freely. हम एक ही साथ रहते हैं, हम अपने धर्म को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फ्रीली करते हैं. That is the ideal post-independence ideal we cherished for and we are living for it. चलिए, Indians see religious tolerance as central part of who they are as a nation. हमें नेशन कहते ही हमें we see religion as a central part. To be true Indian, it is needed to respect all religion. These are the ideals that they follow. That to be a true Indian, you need to respect all religion. Mind this word. To be a true Indian, you need to respect all religion. That is what we cherish. After 75 years of independence, we are cherishing this and we are saying that we respect all religion, we tolerate and we coexist with other religious communities together peacefully practicing our own religion. This is the ideal. This is the ideal which we cherish after 75 years of independence. Indians say it is important to respect all religions, but major religious groups see little in common and want to live separately. This is the finding. They say we respect, but major religious groups see little in common. कितनी कॉमनलिटी है, कितना कमेंसलिटी है. कमेंसलिटी, सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर. कितनी कमेंसलिटी है,
कितनी इंटर रिलीजियस मैरिजेस होता है। मैरिज तो दूर की बात, प्यार मोहब्बत हो गया, बाप माँ को पता चल गया तो लंका कांड हो जाएगा। कल को तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा कि तुम किसी ईसाई लड़की या किसी मुस्लिम लड़की के साथ तुम्हारी दोस्ती है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। My friend Bipin, who got married to Afghani girl, was discarded throughout his life till parents were alive. But मरते मरते उनके फादर उनके नाम पे कुछ छोड़ के गए, जो भी है, whatever it is. We respect, but we don't interact. We live separately, but we respect. Okay. नमस्ते, दूर रहो भाई। Many Indians across a range of religious groups say it is very important to stop people in their community from marrying into other religious groups. Many Indians across range of religious groups say it is very important to stop people in their community from marrying into other religious groups. Commensality, marriage, ये सब होता नहीं है। In spite of the fact that we claim that we are living up to the ideals after 75 years of independence, but there is no commensality, there is no marriage, and we all live separately. We all live separately. There's no interaction. Variety is there, diversity is there. What is missing? The missing point is pluralism. Pluralism is not diversity. Pluralism is diversity and the interacting groups. We have different castes, but we don't interact with the lowest caste. Our commensality is not there with the lowest caste. Our marriages do not occur outside the caste. We have the principle of caste endogamy. So it is not caste diversity है, कास्ट प्लूरलिज्म नहीं है। चाहिए क्या? प्लूरलिज्म। वी नीड अ प्लूरलिज्म। Moreover, Indians generally stick to their religion of their own group when it comes to their friends. उनके दोस्ती अपने धर्म के लोगों के साथ ही होता है, बहुत कम होता है कि एक ईसाई लड़की या ईसाई लड़के के साथ हिंदू लड़की या हिंदू लड़के का एक गहरा दोस्ती है। बहुत कम होता है कि एक अछूत अनटचेबल लड़के के साथ एक सवर्ण लड़की की दोस्ती है। रिलीजियन में भी प्लूरलिज्म नहीं है, जैसे कास्ट में नहीं है। In other words, Indians' concept of religious tolerance does not necessarily involve mixing of religious communities. Tolerance है, there is a tolerance, but मिक्सिंग नहीं है। मैं अगर सोशियोलॉजिकली इसको कहूं तो मैं कहूंगा प्लूरलिज्म इज लैकिंग। डाइवर्सिटी विदाउट प्लूरलिज्म मेक्स नो मच सेंस। टॉलरेंस है, मैं बर्दाश्त करता हूं। घर पे बुजुर्ग लोग हैं, आई टॉलरेट, but I respect also, but I don't interact, as a result of which they feel isolated,
They feel depressed. They want to talk, but they will never get anybody to talk. बुजुर्ग माँ अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ बात करने के लिए बेताब है. बेटा अपनी बीवी के साथ मस्त है. बुजुर्ग माँ घर में अकेली है. तन्हाई, मायूसी, isolated, all these things come up. I'm talking, giving this example at the family level. It's also at the society level. While people in some countries may aspire to create a melting pot, America, they call it, ours is a melting pot. All people come here. Mexicans come, Indians come, Pakistanis come, Bangladeshis come, Latin Americans come. They come and they get melted to become an American. They all live, they have to, they say, you live your these things and behave like a decent American citizen, we have no problem. While people in some countries may aspire to create a melting pot of different religious identities, many Indians seem to prefer a country more like a patchwork fabric with clear lines between the groups. They said, we don't want a melting pot. Hindu, Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist, सब melting होके एक Indian. No, no, no. America, let them have it. One American. We have patchworks. Patchworks of Hindus, patchwork of Muslims, patchwork of Sikhs, patchwork of Christians. We need patchworks. We don't go for a melting pot. Okay? I think this is enough for religion. We don't want a melting pot. हमें एक मेल्टिंग पॉट नहीं चाहिए. हमें मेल्टिंग पॉट से खास लगाव नहीं है जो अमेरिका में है. अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल कल्चर्स. मैक्सिकन गो देयर, मैक्सिकन फूड मिलेगा. मैं गया नहीं कभी, तो लोग वहां पे खूब मैक्सिकन फूड खाते हैं. एवरीबडी वांट्स हिज आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी. ठीक है ना? You also want identity autonomy. I also want identity autonomy. Anyway, chalo. Quickly we'll come to tribe. In tribe also we'll discuss 4 points. The definitional problem of the tribe. How to define a tribe? It's a huge problem. How do you define a tribe? Who is a tribe? How can you define a tribe? Colonial policies for the tribes, British policies related to tribe, issues of integration and autonomy of the tribes. Integration, mixing with the mainstream, autonomy, to keep completely autonomous. हम जो करें अपनी मर्जी से करें. अब ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक इश्यू है. वन बाय वन विल लुक इनटू इट. इसको खत्म करेंगे. डेफिनेशनल प्रॉब्लम. ओके, धीरे धीरे लिखो. Historical background. First we need to understand what is the historical background of the tribes in India. What is the historical background? The term tribe was first used by British. उसके पहले this word tribe wasn't there. They, from their experience of Africa, their experience of Latin America, maybe Arunta tribes of Australia, whatever it is, वो तो बाहर बाहर जाते थे ना.
चारों तरफ अफ्रीकन कंट्रीज में इधर उधर। वहां वहां जिन लोगों को देखा, द पीपल whom they observed, they use that particular knowledge. Everybody uses his expertise, experiences. They, from their experience of Africa and America, thought these groups of people as kinship based group and is in a stage of evolution. Kinship based groups. What is kin? Immediately you will say, what is kinship based group? Kin is a kind of a relationship, and this kin is of two types: रिश्ता खून का, रिश्ता प्यार का. If I speak in English, kinship of two types: blood kin and marital kin. K-I-N. Okay, one is a blood kin, other one is marital kin. रिश्ता खून का, रिश्ता प्यार का. My child is my blood kin. My wife is my marital kin. There could be some fictitious kin, काल्पनिक, इमेजिनरी. क्या काल्पनिक? मैं मेरे पड़ोसी को दादा बुलाता हूं, भैया बुलाता हूं. मेरे पड़ोसी के बच्चा मेरी वाइफ को मौसी बुलाती है. दीज आर कोई रियल मौसी नहीं है, काल्पनिक मौसी है. और कभी कभी दोस्ती भी बनती है तो एक पत्ता देके या एक फूल के एक्सचेंज से. उसको यूपी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे एक्सचेंज करके भी रिश्ता बनता है. उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है. तो ब्रिटिश पीपल, दे ऑब्जर्व्ड अफ्रीकन ट्राइब्स एंड दे सेड these tribes are also kinship. They are related either by blood or by marriage, and they are autonomous groups, and they are in a stage of evolution. They haven't evolved properly like us with coat, tie and hat and shoes and sticks. ये सब करना नहीं सीखे. They are in the nascent stage of evolution. They haven't constructed roads. They haven't constructed cars. They're still plucking fruits and flowers, eating it, whatever they get, that's more than enough for them. It's a nascent stage of evolution. After studying Indian tribes, they said. Okay, so far so good. So, to protect these tribes, they wanted, whatever the stage they are, let them be there, let us not disturb them. Tribal areas were put out of the purview of general laws. उन्होंने कई कानून बनाए. सड़क पे बाएं हाथ से चलना है, मगर ट्राइबल को बोला नहीं नहीं तुम अपने तरीके से चलो. Separate legislation under collector protected tribal areas, gave a complete authority to the legislator that you protect them. If they are into shifting cultivation, let them go for it. If they are into the forest, let them go for it. If they are into the coastal area and fishing, let them go for it. Don't put any restriction. Initial stages, these tribes were not restricted. लकड़ी काटते हैं, काटने दो. मछली लेते हैं, लेने दो. जानवरों को काटते हैं, काटने दो. Let them be in their own domain. इंटरफियर मत करो, बाहर वालों को इंटरफियर करने मत दो. District collector was instructed, outsiders should not disturb them. This was the initial phase of tribe understanding and approach of the British colonial masters.
ठीक है, अभी देखते हैं। इन 1881, आज से करीब करीब 200 साल पहले, ब्रिटिश हैड done a census, counting. Census is nothing but counting. They had done a counting. Tribes were a subheading within the broader category of agricultural caste. बोले एग्रीकल्चरल कास्ट को उन्होंने काउंटिंग किया। एग्रीकल्चर, वो जो कुर्मी कास्ट, जिसको यूपी में कुर्मी बोलते हैं, उसी कैटेगरी में एक सब कास्ट डाल दिया, ट्राइब्स। दे कॉइंड द टर्म ट्राइब, उसको डाल दिया। In 1881, the first census, tribes were subheading within the broader category of agricultural caste. ठीक है, इट्स ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। उसके बाद इंपीरियल गेजेट निकलता है ब्रिटिश का, जैसा अभी हमारा गेजेट निकलता है, ब्रिटिश ऑल्सो ब्रॉट गेजेट्स। एक एक जगह के गेजेट निकालते हैं। गेजेट क्या निकाला? मेंशन्ड अबाउट कॉमन नेम, डायलेक्ट, टेरिटरी एटसेट्रा ऑफ द ट्राइब्स। प्रायर टू दिस ट्राइब के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। इंपीरियल गेजेट जब निकला, ब्रिटिश एम्पायर का गेजेट जब पहली बार निकले, तब 1911 में ट्राइब का टेरिटरी बोला गया, लोकेलिटी, नेम्स, उनकी डायलेक्ट क्या है, ये सारी बातें वहां पे लिखी गई। अंडमान्स में जारवाज हैं, उनकी भाषा ये है, मध्य प्रदेश में गोंड है, भील है, वगैरह वगैरह है। नॉर्थ ईस्ट में गारो है, खासी है, ये सब है। ये सब नाम, उनकी लोकेलिटी, उनके डायलेक्ट, उनके पॉपुलेशन, एवरीथिंग वाज मेंशन्ड इन इंपीरियल गेजेट इन 1911. After independence, tribes were categorized and put in a table, ऐसे टेबल बनाया, उन पे नाम लिखा, टेरिटरी लिखे, डायलेक्ट लिखा, उनके बाकी क्राइटेरिया लिखे, एक टेबल फॉर्मेट, स्केड्यूल फॉर्म पे जब पेश आया, उनको बोला गया स्केड्यूल्ड ट्राइब। टेबल का ट्राइब है, टेबल में जो जो नाम है वही है ट्राइब। सो दे आर scheduled tribe. Why they are scheduled tribe? Because their names were put in a tabular form. They were counted. Their tables and other things. Sorry. So they were called. हाँ, एक टेबल पे बना के उनको स्केड्यूल ट्राइब बोल दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। They all are identified and ratified to be put in the schedule so that the nomenclature schedule glossed over all other criteria. Tribes could have been classified as hill tribes. They could have been classified as tribes. They could have been classified as primitive tribes. They could have been classified as detribalized tribe. There are tribes who are no more tribal. Their primitivity gone. They are educated. They are industrialists. On the basis of that, they could have been categorized. But this constitutional table glossed over all other criteria, saying that they are the scheduled tribe. A wonderful, I mean, not wonderful, the kind of a peculiar nomenclature which got
popularized. It got so much so popularized that it glossed over all other criteria, simply scheduled tribe. एंड उसमें सारा जनरलाइज है, ये ट्राइब है. अरे भाई ये डिट्राइबलाइज्ड हो चुका है, ये इंग्लिश मैन बन चुका है, इंटरमिक्सिंग हो चुका है, इसके रंग बदल गया है, इसके रूप बदल गया है, इसके खान पान बदल गया है, इसकी पढ़ाई लिखाई बदल चुकी है, मगर हम उसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब. अजीबोगरीब एक nomenclature got so much so popular that we discarded all other criteria of classifying tribal people in India. Tribes have a clustering tendencies in hills, forests, and inaccessible areas. But this cannot be generalized. What was generalized? Scheduled tribe. That got generalized. That got generalized. And that is refusing to die. Some authors tried to, I am not naming, again it will be burden, itna yaad kya rakhoge. This is, there are detribalized tribes. I am not saying this. These are the big authors who studied. And then they say there are detribalized tribes. Simply categorizing all tribes as a scheduled tribe, it takes away its characteristics. And the moment we talk of tribe, the thing that comes to our mind is a primitive, is aborigine, is हिल में isolated रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, in a stage of evolution, blah 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 blah. ऐसा नहीं है. But कॉन्स्टिट्यूशन उनको एक टेबल में डाला, टेबुलर फॉर्म पे रखा, सो वी कॉल्ड टेबल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब. ये है डेफिनेशन की बारीकियां. कॉन्स्टिट्यूशन सेज अ ग्रुप कैन बी कॉल्ड ट्राइब इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर and notification by the president, and the parliament can modify it. Constitution also did not define tribe. इन्होंने डिफाइन नहीं किया. कॉन्स्टिट्यूशन बोला if the state governor says that such community will be categorized as a tribe, then they are tribes. President will approve it and parliament तो define नहीं किया है. These are the problems of definition of tribes. This is the historical background. In 1951, SC/ST Commission proposed common elements like origin, primitivity, remote habitation, etc. for defining tribes. तो SC/ST Commission जब बनी थी, तब उन्होंने कहा था, on the basis of origin, primitivity, remote habitation, etc., let us define tribes. SC/ST Commission ने कहा, पर उस आधार पर हुआ नहीं है. मोटा मोटा, let us understand that tribes do not have a definition. They have different criteria: hills, primitive, origin, detribalized, completely isolated, coastal, etc. etc. वो कुछ criteria देखा नहीं गया. Those who are put in the schedule, they are called scheduled tribes. All in a category, homogeneous बना दिया गया. ये लोग homogeneous नहीं है. That is the problem of the definition of tribes. उनको scheduled tribe कहा जाता है, but they are not homogeneous like scheduled tribe. They have different varieties. ठीक है, you got understood this? This is the problem. Chief Minister Soren, Hemant Soren, he said, hey, एक minute. He said, this lazy colonialist, these are the lazy people, they never try to look into what they are, how they are, what are their criteria, nothing. They did a colonial census and labeled tribes as Hindus.
सबको बोल दिया दीज आर द बैकवर्ड हिंदूज. नो, दे आर नॉट. In Northeast, almost 75% are Christians, isn't it? Almost 75% will be Christian. And islander tribes, they do not have any religion other than animism. They are the worshippers of water. In Koraput, they do not have any religion other than worshippers of trees and forests. But this lazy colonial census people have no business, and they called it, these are backward Hindus. This backward Hindus term was given by a professor from Bombay University, Govind Sadasiv Ghure, GS Ghure, Indology. Because you said you are doing sociology, so I am quoting him. He said, tribes are nothing but backward Hindus. No, tribes are animistic. That is what I said. You got converted. Well, yes, we are converted. So what is your religion? Sir, nature worship. We are animistic. In spite of the fact that 100 years down the road, he still feels my religion is nature worship. ठीक है, certain rituals I follow of Christianism, certain rituals I follow also of Hinduism. Doesn't matter. Originally, we all are animistic. We all are animistic. हम सब नेचर वर्शिपर हैं. हम सुबह उठ के जवाकुसुमं कश्यप्यं शंकाशं महाद्युतिम सूर्य देवता सूर्य प्रणाम करते हैं. हम करते हैं. हम एनिमिस्टिक हैं. That particular nature worship is there with all of us. RSS says he is parroting evangelical propaganda. Evangelical means वो जो क्रिश्चियन ग्रुप है ना, इवेंजेलिकल ग्रुप है, बैप्टिस्ट ग्रुप, कैथलिक ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, दैट इज इवेंजेलिकल ग्रुप. हेमंत सोरेन इज डूइंग नथिंग बट पैरेटिंग इवेंजेलिकल प्रोपागेंडा. कॉन्फ्लिक्ट. यही है डेफिनेशनल प्रॉब्लम. कभी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया, कभी आरएसएस उसको हिंदू बोल दिया, कभी कोई आदिवासी बोलता है हम हिंदू नहीं है, हम नेचर वर्शिपर है. उनके क्राइटेरिया ऑफ प्रिमिटिविटी, उनके क्राइटेरिया ऑफ मॉडर्निटी, उनके क्राइटेरिया ऑफ ट्राइबलाइज्ड और डी ट्राइबलाइज्ड, ऑल दिस आर ग्लॉस्ड ओवर बाय scheduled tribe. Article 5, Article 6. Your area is protected by Article 6. The middle stratum of the tribal in India are by Article 5. Huh? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. पहले it was जन संघ. Later on it became. झारखंड में आदिवासी है, अधिकतर भी वो क्रिश्चियन में जा रहे हैं. दिल के कोने में एनिमिज्म पड़ा हुआ है, चाहे किधर भी जाए. सी ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग वहाँ उन्हें गुमराह करके करके जिसने कन्वर्ट किया जाता है और नहीं समझ पा रहे हैं. Hi, just a minute. He has said one statement. I'll tell you. आपने गुमराह कहा, ठीक है ना? ए स्वीट बॉय, इसको सुनो. इन्होंने कुछ कहा कि गुमराह करके कन्वर्शन हो रहा है. मुझे कोई थोड़ी गुमराह कर दे, थोड़ी पैसा मदद कर दे, मैं छोड़ दूंगा यार. थोड़े पैसा देना. सारी बुद्धि तो तुम्हारी है और हमारी है. थोड़े कम समझता है. आप बोलोगे ना तो बस हाँ मान जाएगा.
नहीं उतना दिमाग नहीं लगा, अच्छा ये बहुत से पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत अच्छा अच्छा। ये वाला सुनो, ये वाला सुनो, जस्ट आई टेक 5 minutes. We were to do a evaluation of maternal and child health services of Eastern Diocese, Eastern India Diocese. ये सुनना यार, हाँ, Eastern India Diocese, that Christian body, they are working for mothers and child health. We started all the way from Odisha, karte 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 karte. The last was Kalimpong Diocese. Kalimpong is West Bengal, hill state, I mean hill district. We went there. After reaching Kalimpong, they said you have to go to such and such place. There you will have a, what you call it, you have to go to that particular place. We went there and there was a rope way. There was a rope way. रोप वे क्या है? हमने सोचा देवानंद वहीदा रहमान के कांच में घेरा हुआ एक सुंदर, वहां पे गाना गाते गाते जाते हैं, हम भी मस्ती मारेंगे रोपवे में. रोपवे वॉज ए पट्टा, उसमें दो लोहा लगा हुआ है, ऊपर एक लोहे का रोप है, उसमें दो लोग, तीन लोग बैठेंगे. 3 people will sit. We sat. Ropeway moved. It started moving. All of a sudden, the Tista river below was like a thread. I do not know how many 100 feet I was above the ground level. I started shouting. Mary, named a Christian girl, was sitting between me and Shakti. We were two sides. I shouted, Mary! I was just married. मैंने बोला मेरी, बोले कि दादा लुक एट द टॉप, डोंट लुक डाउन. आपका हाथ फिसल जाएगा. द टॉप. Like this it went. We were traveling like this for 35 minutes. After that, another hill came. One hill to the other hill. 35 minutes. It was so dangerous. Anyway, somehow or other we reached. Then it was a good river, stream, other things. We have to climb the hill. We started climbing. We started climbing. We started at 9 o'clock in the morning. By 2 o'clock, whatever the food we had, we finished. Water we had, we finished. इतनी सूखा पत्ता. 4 कदम आगे पांव बढ़ाए, 2 कदम पीछे आए, फिर 4 कदम आगे बढ़ाए, 2 कदम पीछे आए, करते 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 करते. When it is about 5 o'clock, I said, there were 3 girls, 3 boys like this. I said, Sumita, कहाँ आगे रहे, कपड़े उपड़े कांटे वाटे लग के सब फट फुट गए, अब तो टांग पे चला भी नहीं जाता है. बोले दादा कहाँ लेके आ गए? Where do you have brought it? अब क्या करेंगे? जंगली जानवर आएगा तो क्या करेंगे? प्यास भी लगी, we have to. तो we saw few people were coming down. We said, we need little water. We were not able to talk in language. We were using sign language. But बोला चलो चलो. खाया. एक जगह पानी थी. पुर 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 पुर. छोटा सा एक ये था, गड्ढा था, वहां से बूंद बूंद पानी ऊपर उठ रहा है. बोला दिस इज द स्ट्रीम. स्ट्रीम पीने के लिए, पीने के लिए. तो एक पत्ता लिया, पत्ते को ऐसा गोल किया, बोला उठाओ और पियो, उठाओ और पियो. मैंने बोला ये तो गंदा हो जाएगा. बोले ऊपर ऊपर लेना, नहीं तो पूरा मिट्टी हो जाएगा. मैंने बोला यार, मेरे एक फ्रेंड सेरेब्रल हैमरेज हैड, वो पानी मांगता था, पानी दे पानी दे. हम एक एक बूंद देते थे, फिर वो चला भी गया. हमारा दशा तो यही हो गया. वी वर 6, थोड़े थोड़े पानी ले रहे थे और पी लिए जो भी है. देन वी स्टार्टेड वॉकिंग वॉकिंग वॉकिंग. इट वॉज क्या पीक है, वही वाला पीक, मंदाकिनी फंदाकिनी क्या पीक पता नहीं. Snow-cladded peaks were visible. Then
सन वॉज सेटिंग ऑलमोस्ट। आई सेड इट्स गॉन, अभी रात हो जाएगा तो, और कितना दूर है कितना ऊपर है कुछ नहीं पता, सड़क तो दिखता है। Then while walking, all on a sudden we saw some white gowns. I said, hey, I can see something, some Christian people over here. They say, yes, my son, please come, please come. You came for the first time, so you took little more time. Otherwise, in 6 hours, one can cross this distance. 6 hours you have to climb to come. First 35 minutes on that rope way, risky rope way. Then you have to climb some 4 5 hours or 6 hours. मैंने बोला चलो, गए। Then she offered us a good soup, Maggie, and then we changed our clothes. Then we came for a dinner. Good chicken, weekend, सब कुछ बढ़िया था, हम डिनर किया. Then say we'll go for a prayer. We went for a prayer. A carol song was sang in the church. We sang it. It was interesting. We went. Wooden houses were there. Three girls one side, we three in the other. We were sleeping. एंड सोते ही नींद आ गई। आज तो नींद की गोली खा के सोना पड़ता है, स्लीपिंग पिल्स यू हैव टू टेक। उन दिनों इतना मेहनत किया, सो गया। एट अबाउट 11:30 नाइट देयर वाज अ स्क्रीमिंग साउंड ऑफ अ लेडी, बचाओ बचाओ टाइप का। मेरे को तो कान में सुनता भी नहीं ठीक से, पर I could understand screaming. I knocked at the door, the wooden wall, saying, hey, Rita, Sumita, you people don't go out. Something as wrong is coming. Don't come out. Will not go. She kept on screaming, screaming, and screaming. I think she was screaming for about 45 minutes or so. And then she cooled down. I said, आज कुछ हो गया यार इस गांव में. Only 200 villages, 200 families. Then we slept again. In the morning, we went to the breakfast table at about 6:30 or 7. We were just to take breakfast. All of a sudden, that very Sister Cyril. Hi, my son. How was your night? Did you have a good sleep? I said, Sister, we had a good sleep, undoubtedly, but in the night there was a screaming sound of a lady we did not understand. We could not come out. Oh, yes, yes, that was a good news. I was there throughout the night. The lady gave birth to a baby boy. I said, oh, I was there. I was just coming throughout night. I was there. I just had my bath and I'm coming. We'll have a breakfast with you. She took a breakfast with us. Then she took us to the total village. I said, Sister, can you say about something about you? Well, yeah, I am Sister Cyril. At the age of 22, after completing my BSc nursing from St. Martha's Hospital, Bangalore, I decided that I'll become a nun. I joined Catholic Relief Service as a nun, and I'm posted at this Tanyang village. And since then, some 40 odd years, I'm serving these villagers. They are very helpless. Neither they have little paracetamol they don't get when they suffer from fever. I get relief services from Catholic Relief Services, which I distribute them. Such kind of delivery in some pain, I give a little bit of relief to them. I said, मन ही मन सोचा, ईश्वर देखने के लिए गिरजाघर या मंदिर या मस्जिद या कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड. सिस्टर सिरिल खुद साक्षात देवता थी मेरे लिए. 66 साल उम्र में पूरे रात सेवा करके दिन में फिर हमें सर्वे के लिए लेके जाना. अगर उसके बाद उन्होंने बोला लॉर्ड इज जीसस, आई वुड लव टू हैव दिस लॉर्ड. शी हैज बीन, आई बेट, हमारे किसी नर्स को वहां पे 1 लाख रुपए तनख्वाह दे के पोस्टिंग दी जाए, 1 महीने रह नहीं पाएंगे, वो वापस आ जाएंगे घर द्वार छोड़ के. All conversions are not like this. Conversions are always from the heart of the heart.
आज मुझे कन्वर्ट कर दो, मैं कल फिर हिंदुइज्म पे आ जाऊं? नहीं। अगर मुझे गोमांस खिलाने से मैं मुस्लिम बन जाऊंगा और उसके बदले मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएगा, मैं कल खाऊंगा, खा के फिर मंदिर जाऊंगा। कौन मुझे रोक सकता है? रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। रिलीजन इज द फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम विद इन, कन्वर्शन फ्रॉम विद इन, फ्रॉम नॉट फ्रॉम आउट। अरे मुझे कोई करना चाहे, कुछ पैसा दे दे, मैं हो जाऊंगा यार, फिर मैं वापस आ जाऊंगा हिंदू धर्म पे। मासूमों को गुमराह करते हैं। अरे गुमराह कर न, थोड़ा दे, फायदा दे। अरे रोज हमारे जो दलित है ना, रोज बुद्धिस्ट बनते हैं, रोज मुस्लिम इस्लाम ले लेते हैं, फिर रोज आदिवासी में आ जाते हैं। रोज 4 बार धर्म इधर उधर कर लेते हैं। कोई बुराई नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर वाज नो कंसेंसस अमंग स्कॉलर्स रिगार्डिंग ट्राइब्स। Tribe, Adivasi, and ST are generally used interchangeably, though they may not be the same. A fisherman tribe is not वो जो उस कैटेगरी में नहीं आ सकता है, मगर we are putting them as Adivasi. Rahul Gandhi gave something he said, कुछ आ गया. For example, सांथाल्स, वेस्ट बंगाल में एक सांथाल ट्राइब है, झारखंड में भी सांथाल है, बट आसाम पे सांथाल ट्राइब नहीं है. Santals in Assam are not the tribal people. Such classification depends on socio-political factors. All these classification depend on the socio-political factor. गवर्नर बोलेगा तो वो ट्राइब होगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन आई मीन शेड्यूल में उसका नाम जुड़ जाएगा. So it depends on the socio-political factors. Scholars should not forget that tribal society, in spite of their differences, is also like any other Bengali, Oriya, Telugu, etc. इसको तो हमने क्लासिफाई नहीं किया. शेड्यूल ट्राइब को भी अलग करके ट्राइब बना के रखने का क्या है? खैर, पॉलिसी प्लानर्स ने जो बनाया तो बनाया, है ना. हम सिर्फ पढ़ लेंगे, क्या हुआ है बता देंगे. ठीक है, इसको आगे चलाओ. ट्राइंग टू डिफाइन ट्राइब इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज. ट्राइब को डिफाइन करने का कोशिश एकदम फिजूल का है, बेकार का है, कोई काम का नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Don't try to define tribe. Tribe is in the schedule of Indian Constitution, so they are scheduled tribes. Though they are not, they cannot be generalized like that. There could be hill tribe, there could be coastal tribe, there could be primitive tribe, there could be modern tribe, there could be detribalized tribes. Nevertheless, we can generalize them as tribe. है ना? ठीक है, समझ में आया? हिंदी नहीं बोल रहा हूं, नहीं. ज्योग्राफिकल स्प्रेड मैंने तुम्हें बता दिया. मानचित्र का as such it is not possible to accurately classify them into different groups based solely on geographical location. I try to तुम्हारे दिमाग में बस जाए. You should not forget. That's why इंडियन मैप को मैंने 3 कैटेगरी में दिया. एक नॉर्थ ईस्ट, एक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वो जो मिडिल वाला, और एक नीचे वाला साउथ में. क्या बाकी जगह में ट्राइब नहीं है? जम्मू कश्मीर में ट्राइब नहीं है? है ना. क्या गुजरात में ट्राइब नहीं है? है ना. बट मैंने आपको याद रखने के लिए बोला कि एक है नॉर्थ ईस्ट मेजर कंसेंट्रेशन,
एक है मिडिल इंडिया मेजर कंसंट्रेशन, एक है सदर्न एंड आइलैंडर ट्राइब्स अनदर मेजर कंसंट्रेशन। और याद रखने के लिए द नॉर्थ ईस्ट आर 75% Christians, middle India are a mix, some of them from tribe to go to other religion and then come back to their original animistic religion. Hey gentlemen, this middle India tribes like तुम्हारे झारखंड वो sometimes they go to Christianity and come back again. That is the criteria studied. They go to Christianity and come back again, saying that we are animistic. जो क्रिश्चियन हो जा रहे हैं सर सरकार में कोई कल्चर नहीं है, फिर वो वापस आ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है। हाँ ठीक है, क्रिश्चियनिटी लेके क्यों बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं, नाम तो उसमें रहेगा, अपने आदिवासी में क्रिश्चियन भगवान को बुलाएगा, कल केक काटेंगे। हो गया तो क्या हो गया, हो गया तो हो गया, नाम तो वैसे ही है ना, फलाना मुर्मू करके तो नाम तो है ना। तो मगर घर पे मैं अगर केक काटता हूं कल को, कौन मेरा गला काटेगा, कोई नहीं। By considering tribes as non-nomadic, zonal classification can be attempted based on geographical distribution. अगर उनको आप, if you are considering them as nomadic, nomad you understand, बंजारे, अगर आप उनको बंजारा समझते हैं कि इधर से उधर भटकते हैं, then you cannot classify. But if you consider that they are the permanent settlers of a particular locality, then you can classify them based on their geographical location. Let's see. Major tribal zones. Major tribal zones are Northeast, Central Zone, and Islander Zone. These are the Lakshadweep or Andaman, Minicoy, Nicobar, एकदम मेजर कंसेंट्रेशन। बाकी थोड़ा बकरावाल ट्राइब इन जम्मू, वो जो लड़की बलात्कार हुआ था जम्मू में, शी बिलोंग टू बकरावाल ट्राइब, शी बिलोंग टू बकरावाल ट्राइब। बाकी छुटपुट हैं, मगर मेजर कंसेंट्रेशन नॉर्थ ईस्ट, मिडिल इंडिया एंड द आइलैंडर ग्रुप। The north and northeastern zone, the central zone, southern zone and islander zone, these are the basic geographical classification of tribes in India. भूलोगे नहीं ना, northeast, central India, central zone and the southern and the islander zone. ये तीन कैटेगरी के हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट आर द नागा, मिजो, चकमा, गारो, खासी, जयंतिया, लेप्चा, भूटिया। नागा में भी बहुत कैटेगरी है, जिलिंग, सुमी और क्या क्या है बताओ, बता सकते हो? देयर आर मेनी। एंड सेंट्रल जोन में है गोंड, भील, खोंड, सांताल, उरांव एंड मुंडा, कोया। देयर आर मेनी 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 मेनी, बहुत सारे हैं। एंड ओ सॉरी, मैं बेसिकली नागालैंड में एक, मिजो में एक, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया और सेंट्रल जोन में गोंड, भील, कोंड, सांथाल, उरांव। एक बार याद रखो, हो जाएगा। और ये याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी तो है इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इनकी डेफिनेशन प्रॉब्लम, एंड फाइनल पॉइंट विल कम टू इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी, वो देख लेंगे, याद रह जाएगा आई एम श्योर। एक बार सुन रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं, उसके बाद आपके गूगल ड्राइव में, मोबाइल में जब आपके पास ये नोट्स होंगे, ऑफ टाइम पे थोड़ा देख लेना, ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ा देख लेना, हो जाएगा। सदर्न जोन में कुरुम्बा ऑफ नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, कोया ऑफ आंध्र प्रदेश, अडियंस ऑफ केरला, हलक्की, वोकलिंगा ऑफ कर्नाटका, दिस आर द फ्यू। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर,
आइलैंडर जोन में जारवा, अंडमानीज, निकोबरी एंड अदर्स आर फाउंड इन दिस जोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज सेड, वो जो राजा महाराजे होते थे ना, जूनागढ़ का राजा, ग्वालियर का राजा, पुरी का राजा, ट्रवंकोर का राजा, मैसूर का राजा, जम्मू के राजा हरि सिंह वगैरह वगैरह, they had a good reputation as feudal autocrats. Many princes pursued liberal policies toward tribal groups. They were pretty liberal towards the tribal groups. It's said Bhil and Meena were taken into the princely government. Bhils and Meenas of Rajasthan and Madhya Pradesh, वो प्रिंसली स्टेट जो थे ना, राजा इनको लेते थे अपनी शासन में। Tribes were given ownership of land in Travancore and Cochin. ट्रावंकोर का महाराजा आदिवासियों को, वहां के जो मछुआरे आदिवासी हैं उनको लैंड देते। Bakrawal tribes of Jammu and Kashmir were employed as tax collector. They were not into the labor class like Britishers had kept them. वैसा नहीं रखा था। प्रिंसली स्टेट्स उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, उनको टैक्स कलेक्शन में लिया, उनको सेटल कल्टीवेशन के लिए लैंड दिया। इट इज सेड दिस फ्यूडल ऑटोक्रेट्स were treating the tribals in a better manner compared to the British administrators. नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ पॉलिसी अलग है, सेंट्रल जोन के लिए कुछ पॉलिसी अलग है। ये पॉलिसी डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पॉलिसी रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट। द ट्राइबल पॉलिसी फॉर नॉर्थ ईस्ट, or they are called the frontier tribes because they are linked with the almost the border of the state with Burma, so they are called the frontier tribes, was little different from that of the central zone, that is the non-frontier tribes. Northeast tribes were little different from the central zone tribes. क्या है? The main reason was geographical terrain. सेंट्रल जोन में वो ज्योग्राफिकल टेराइन नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट के नागा हिल्स में, जफू टॉप में, मिजो हिल्स में, जुकू वैली में। हैव यू बीन टू जुकू वैली? यू बीन? ओके। सो these terrains are completely different from that of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha. They were different. The main reason was geographical terrain. वो ज्योग्राफिकल टेरेन दिखाने के लिए मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट का एक मैप आपके सामने रखो। इसको कुछ कर नहीं पाएंगे आप, इसको सिर्फ देख लीजिए। से दिस इज मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इनके साथ बॉर्डर कौन सा है? बर्मा। वो क्या करता है? आए दिन हमला कर देता है, आए दिन वो हमला कर देता है। और इधर इट इज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नागपुर, आंध्र प्रदेश, ये वाला मिडिल जोन, और ये है नॉर्थ ईस्टर्न जोन। और ये दे आर द फ्रंटियर ट्राइब्स, क्योंकि म्यांमार के साथ सटा हुआ है। वहां पे बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, टिपिकल चिंग। मैंने बोला ये कहाँ का है? बोला बर्मा, बर्मीज समथिंग, पैकेट में चिप्स, वेरी टेस्टी। तो यहां नहीं मिलता है, वहां पे मिलता है। एनीवे, बर्मा अटैक्ड अहोम किंगडम। अहोम मीन्स असम। Burma attacked a home kingdom. If you do not understand these dynamics, you will never understand why any policy is like this. Burma attacked Assam. Ahom sought the help from British. Ahom Raja
आसाम के राजा, वो तो प्रिंसली स्टेट था. जैसा राजा हरि सिंह वॉज अ प्रिंसली स्टेट. ड्यूरिंग द पार्टीशन ही सेड आई विल नॉट गो विथ इंडिया. बट व्हेन काबुलीज अफगानिस्तान से हमला कर डाला, तब उन्होंने बोला हमें तुम बचाओ. तो इंडिया उसको आर्टिकल 370 के तहत एनेक्स किया. सिमिलरली आसाम वॉज इंडिपेंडेंट. आसाम हियर वॉज फुल. वो मणिपुर मिजोरम कुछ नहीं था. आसाम, इट वॉज फुल आसाम. अरुणाचल, ये सब लेके आसाम था. ठीक है. मगर जब ये जब अहोम किंगडम पे हमला कर डाला, तो वो ब्रिटिश को बोला भैया बचा. तो भैया भी बचाएगा क्या? इतना आसानी से बचाएगा? बोला हमारे साथ. वाई? सुभाष बोस वेंट टू हिटलर that we want to fight with British. And बोला what in return you will give me? बोला you give us independence, that's all. बोला I am not that fool. If I win, if I give you independence, you will be part of Germany. बोला नहीं, वो काम नहीं चलेगा. तो मैं चला. तो बोलता है कैसे जाओगे? बोला भैया, बोला ब्रिटिश आर नॉट सो फूल, तुम्हें ऊपर से चलने देंगे, उड़ा देंगे. मैं तुम्हें पनडुब भी दे रहा हूं, सबमरीन दे रहा हूं, तुम यहां से नीचे से जाओ, जापान चले जाओ. ही वेंट टू जापान. जो भी है छोड़ो. सो ब्रिटिश सेड यू विल बी एनेक्स्ड विथ अस, अदरवाइज Assam, which comprised of Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, it was all one Assam. When it was attacked by Myanmar, British saved them from Myanmar and said, you come to India. They came to India. After that, British acquired control over Assam and Manipur. Meghalaya's, Garo Khasi Jaintia, Nagaland, Mizoram, Lucia Hills were annexed with Assam. उनको भी इनके साथ ले आया. बोला आजा, सब हमारे साथ आजा. So Meghalaya's, Nagaland, Mizoram were annexed with Assam. ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो. चलो. Arunachal, Mizoram, Nagaland were identified as excluded area. They were identified as excluded area. For the excluded area, an inner line permit system was introduced. क्यों excluded area? Mainland people will go and exploit these peoples, their resources. So it was said to go to Arunachal Pradesh if I wanted to visit Tawang. Tawang, you know, have you heard the name of Tawang? Tawang is in Arunachal Pradesh, which is the border town of, border of China. So if you have to go to Tawang to visit, you have to first here go to Nagaland, Arunachal House. Go there, take one inner line permit. That permit is for 15 days. So once you get the permit, helicopter में दिखाओ कि this is the permit I have, I will go as a tourist. You will go there as a tourist. You can stay 15 days. You can extend it for another 15 days. But if you go for doing any work, you have to take a work permit for 6 months at the most. You can extend. But you cannot buy a land there. Can I buy a land in Kohima? No. They are excluded areas. They are given certain autonomy. Okay, like I cannot buy a land in Kashmir because under Article 370, outsiders were never allowed as per the constitutional provision to buy a land there. This is now taken out. All the leases will be finished.
Once the leases will be finished, hotels will be under bidding. Whosoever gets that hotel will be the owner of that hotel. Okay. Still, these states have inner line permit. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. बट ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई पढ़ाने वाला, मस्ती का पाठशाला. लूज कंट्रोल. इंडिया में सब कुछ लूज कंट्रोल. But a loose control policy was adopted. Tribesmen were independent in their internal matters only. बाकी तो exploitation खूब चला. सब लूज कंट्रोल है ना. Am I little harsh to the policy of the country? जो भी है. But a loose control policy was adopted. The tribesmen were independent in their internal matters. वो अपने आप बाहर से कुछ सिर्फ तवांग के लिए इनर लाइन परमिट है, मतलब जाने के लिए. बाकी कोई भी जा सकता है, कोई भी रह सकता है. नागालैंड इज फुल ऑफ बिहार, फुल ऑफ बिहार, फुल ऑफ Bangladesh people are also there. Many. Doesn't matter. Gradually integration will occur. It's India. We all will move freely. Only thing is that initially it was a policy of non-interference in the northeast, but tea and timber merchants pressurized the British for trade. हमारे tea merchants, they pressurized British. हमें let us have an entry for trade and business. They wanted. Some tribes migrated to remote places for livelihood. Some became collectors of minor forest produce or laborers in the hands of the contractors. ये तो होना ही था. Contractors के हाथ में, they became laborers. Tea merchants entered, timber merchants entered. लोगों को, लोकल लोगों को बोला मेरे काम कर, तुझे पैसा दे दूंगा. उन्होंने कुछ पैसा लिया. जिनके हाथ में थोड़ी पैसे आ गए वो दिल्ली आ गए. वसंत कुंज में, किशानगढ़ी में रहते हैं, मॉल्स में नौकरी करते हैं, सेल्स बॉयज एंड सेल्स गर्ल्स काम करते हैं. They are much sophisticated, educated. In Sarabia and Company, I have a Mizo girl. She has completed inter CA and pursuing her final CA. Articleship कर रही हैं. मैंने बोला कैसा? बोला सर ठीक है, चल रहा है. कहाँ ये फैसिलिटी होती वहां पे? कोचिंग कहाँ मिल जाता? खैर, नागालैंड हैज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. Some tribes migrated to remote places for livelihood. Some became collectors of minor forest produce or laborers in the hands of the contractors. The organic, this is very important. The organic or the customary right. Custom. What is customary right? Customary right, a hill tribe has a customary right on the jungle. A fisherman tribe has a customary right on water. A pastoral tribe of Jammu and Kashmir, Bakrawal tribe, or who are shepherds, they have a customary right on the meadows. Meadows मतलब वो जो घास जहां पे वो बकरा और घोड़ा चराते हैं. It is a custom. By custom, they are grazers, they are shepherds, they are fishermen, they are hill area people. The custom, because they have been
into the profession for hundreds of years, this customs gives them a kind of a right. No amount of modern law, no amount of modern law can deprive these people. Hills on the forest, hill tribes on the forest, fishermen tribe on the water, shepherds on the meadows, उनको deprive नहीं कर सकता. I'll give an example. When in Himachal Pradesh, Coal Dam hydroelectric project was to be done, it was a run of the river project. It's not a dam project. It's a run of the river project. Huge graveland was used. And these shepherds, they said, when there is a snowfall at the top, in Kulu, Manali, and other places, we come down and graze our animals here. If you are taking this particular land, where do we go? This land doesn't belong to the shepherds. So, सरकारी खाते में तो ये सरकारी जमीन बांध के लिए बन सकता है, विकास के लिए देना पड़ेगा. But head of the project was Kunj Bihari Dubey. He said, Ashish, what is to be done? And so this is a customary right. Something needs to be done. Otherwise, if these people create a trouble, आपका project delay होगा. So क्या करें? You have to give another piece of land, make them for their grazing. यहाँ पे आप 5 एकड़ ले लीजिए और कहीं पे 5 एकड़ बना दीजिए. बोला हाँ ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है. बोले कितना खर्चा होगा? 10 लाख ही हो जाएगा, कर दीजिए. हो गया. They were happy. वहां पे बल्कि उनके मवेशियों को करने के लिए कुछ शेड भी बना दिया गया. They were very happy. The principle is that when you take this natural resources, which is their livelihood, you create another natural resource for them. If we ever get a chance to talk on development, displacement, poverty, and other things, we'll talk on it. The tribal chiefs lost many of their administrative powers and had to follow the rules which were formulated by the British. Colonial policy gave rise to many Adivasi revolts. ये जो contractors घुस गए, they got these people deprived of their customary right, organic right, a right which they have been observing for 200, 300 years. They revolted. Birsa Munda, Santhal, Coal, and other revolts occurred during British period. Many such revolts occurred in the British period. Colonial policy gave rise to many Adivasi revolts. Now the third issue, policy हो गया, अभी the issue of integration and autonomy. Should they be autonomous or they should be integrated with the non-tribals? He told me autonomy. Anybody else other than he? Anybody else is a tribe here? None. What do you think? Tribe should be left autonomous or integrated with the non-tribals? They should be integrated. Okay. तुम्हें आदिवासी लड़कियों से दोस्ती करनी है, हैं? तुम्हारे लड़कियों को भी वो शादी करेंगे?
चलो देखते हैं. What is the issue of integration and autonomy? It is a often question which comes repeatedly in the exam. Except northeastern states, the tribal people are minority in their own states. Northeast में they are majority. But in Odisha, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, they are minority. Except Northeast, tribals are minorities. The integration issue has a separate dimension for the Northeast and that for the Central Zone. Don't categorize them into one. The issue of integration of the Northeast, the frontier tribes, those who are at the Burma border, the issue of integration of the frontier tribes is different from the issue of integration of the Central Zone. इनकी परेशानी अलग है, इनके परेशानी अलग है. क्या परेशानी है? नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन कुछ और है, उनकी परेशानी. सेंट्रल जोन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन लोगों की परेशानी कुछ और है. क्या है अभी परेशानी? फॉर द नॉर्थ ईस्ट, the issue was of autonomy and demand for the hill states and restricted entry of outsiders. The Northeast said, we need autonomy, and they demanded hill state. They said, Lusail Hill should have a state. Garo Khasi should have a state. Jaffu should be a state. All these things they were demanding, that we should have our own states. Nagamese, they said, make us a state. Meghalaya means that Garo Khasi Jayantia, they said, give us a state. Lusai Hills people, they said, make us a state. Langlui, they said, give us a state. Arunachal said, make us a state. Arunachal is the border of China. 1962 में वो तवांग को जीत लिए थे. सड़क बना बना के चाइना आ गया था और उसको जीत लिए. फिर इंटरनेशनल प्रेशर में छोड़ के गए. आज भी वही सड़क है अभी तक. बड़ी बड़ी बातें हैं. 8 साल हो गया है, 75 साल 70 साल में तो नहीं हुआ, 8 साल में भी नहीं हुआ. सड़क नहीं बनी है. तवांग जाने के लिए चाइना एग्रेशन के लिए द रोड दैट दे हैड मेड, उनके टैंक्स आने के लिए वही रोड आज भी है. For the central zone, the issue was poverty. Northeast people are not poor. They are well off. They are very good in English. Hi, gentlemen. You people are very good in English, isn't it? इनके handwriting देख लेना, मैं देखा नहीं. He must be having a fantastic handwriting. Why, you know? The Christian missionaries have spread education in the Northeast like anything. He studied in St. Xavier's. है ना? You studied in St. Xavier's? No. Where? जो भी है. He must have studied in such schools with nuns and missionaries. चमचमाता अंग्रेजी इसने सीख लिया है. अभी तो हिंदी भी सीख जाएगा. नागामीज तो जानता ही है. He will be an all-rounder. But that is not the issue with the central zone. Their issue is poverty. क्या हुआ? सेंट्रल जोन में माइंस है, माइंस खजाना है. कोयले का माइंस है, लोहे का माइंस है, सोने का माइंस है. वहां पे कंपनियां घुस गए एंड इनको बेघर कर डाला. They acquired forest in the name of common property resources, CPR, corporate houses. Even NTPC went to
पत्रा, नो नॉट पत्रा तू, अरे यार झारखंड का वो हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग में चला गया, जंगल ले लिया, इट्स कॉमन प्रॉपर्टी, बोला इट इज अ कस्टमरी राइट, वी हैव बीन ऑन टू दिस, livelihood is our livelihood is forest based, बोला this is the one we are giving. T.S. Mines from Australia was given this पकड़ी बड़वाडी ही, हजारीबाग में पकड़ी बड़वाडी ही, बोले करो. T.S. Mines says first you have to go for a land acquisition, give us land, we'll go for mining. Tribals were protesting. Then the 22 years contract of T.S. Mines Australia was cancelled by NTPC. It gave it to Triveni Engineering of Gurgaon, a very mafia Dabangai party. The day they were awarded, next day they went with this bulldozer, साफ करा दिया. Adivasis revolted, they protested. Babulal Marandi gave a good force. 5 people were killed. The whole revolt was suppressed. ये सारे बेघर हुए, छोड़े चले गए. अभी खूब कोयला आ रहा है, पकड़ी बड़वाडीही एंड चट्टी बरियातू से खूब कोयला आ रहा है, मगर नेशनल रिसोर्सेस में इजाफा हुई होगी. नेशनल रिसोर्सेस मस्ट हैव इंक्रीज्ड, बट व्हाट अबाउट दिस ट्राइबल्स? So the issue of poverty of the issue of central zone tribe is that is of poverty and deprivation, whereas the issue of northeast is not poverty and deprivation. Their issue is autonomy versus integration. चलिए देखते हैं. During the colonial period, a number of merchants, moneylenders, landlords, petty officials, etc., coming from non-tribal community disrupted the life of the tribal people in the central zone. मनी लेंडर खूब चले. उन दिनों बैंक नहीं हुआ करता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी नहीं हुआ करता था. खूब साहूकार, money lender, they were there, and they used to exploit the tribals a lot. Along with that, you have the corporate houses, Jal Jangal Jameen. You remember Rahul Gandhi during his time, he said, no, this tribes of Orissa should have a right on Jal Jangal Jameen. And उसको एकदम ब्रांडेड कर दिया था. ये तो आउटकट से सरकार में है कि एक्टिविस्ट है, उनके अंदर थोड़ा सा एक्टिविस्ट वाली बात है. They acquired their land, disrupted their traditional way of life, exploited them in their own business, etc. The central zone, the tribals were exploited. Their land was taken, their customary right was taken, their forests were taken, their water were taken, their minerals were taken, and with a paltry compensation. But our resettlement policy says if you are taking natural resources, create natural resources for them. I'll give another example of creating natural resources. NTPC at Kayankulam, यहाँ पे केरला के नहीं है. Kayankulam is in between Kochi and Thiruvananthapuram, a place called Kayankulam. In the backwater, you understand backwater? जो समुद्र घुस जाते हैं, Kerala is full of backwater only. And the backwater, sand डाल के, ocean के sand डाल के, they developed that land and created combined cycle Kayankulam combined cycle gas power project. The name is Rajiv Gandhi combined cycle gas power project. While the construction was going on, 200 fishermen out NTPC saying that you have to give us compensation. Well, what compensation? No, we have done it in a backwater. बोलता है नहीं, your
Dredging of sand from the ocean disturbed the fish population in the ocean, as a result of which we have to burn more fuel with our boat to catch fish, and that too, our quantity of catch of fish has gone down. Got it? तुमने रेत उठाए समुंदर से और इसको भरा और इतना रेत निकाले कि मछली डिस्टर्ब हो गया ओशन का, and now you have to go deep inside the ocean burning lots of fuel, and moreover the quantity of catch of fish has gone down. Mr. General Manager, he said, okay, let us do a survey. वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन को वापकोस को एक स्टडी देते हैं, लेट देम डू द फिजिबिलिटीज व्हाट यू आर डिमांडिंग. बोला योर फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट विल कम आफ्टर 2 years, विल बी वेटिंग. हमारा खाना पीना चाहिए, कंपेंसेशन देना है. आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट रिहेबिलिटेशन प्लान. मिस्टर कानन से, आशीष क्या करना है? मैंने सर सिंपल, if you are taking some natural resources, create another natural resources. बोला वो कैसा है? मैंने बोला और एक 2 किलोमीटर दूर में और एक नेचुरल जो बैक वाटर है वहां पे हैबिटेशन बना देते हैं. 200 ही ना है, घर बना देते हैं, सड़कें बना देते हैं, बिजली दे देते हैं, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम दे देते हैं, थोड़ा सा ड्रिंकिंग वाटर का दे देते हैं. वैसे तो झोपड़ी में रहते थे, दे वर स्टेइंग इन द स्लम्स काइंड ऑफ अ थिंग. Will give a good house, good pavement, good street light, good drinking water. Let us have a little bit of school also, school building. 2.5 kilometers far, another backwater area was developed as a village for the fishermen community. They shifted there. By that time, WAPCO's report came. It says dredging of sands actually improves the quantity of catch of fish. ठीक है यार, हिंदुस्तान है, हमारे फिशरमैन है, 5,000 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें से अगर 5 करोड़ खर्चा भी हो गया, कौन सा हाय हुआ है ना? हाउ डू यू हैंडल इट? दैट इज द इशू. हाउ यू इन्वॉल्व द कम्युनिटी into your development process. The way you achieve community participation. You achieve community participation for your development, not their benefit. Your business process gets smooth. That was General Mr. Kannan. That was KB Dubey, Kunj Bihari Dubey at Himachal Pradesh. I'll give you many such examples. You need to handle the issue. Poverty and development issues need to be handled very delicately. That's all. And the one principle is that humanitarian principle. कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. Simple humanitarian principle helps. चलिए आगे बढ़ते हैं. Suffering of tribal people, particularly from the non-tribal, led the number of rebellion, Santhal uprising, Munda uprising. This non-tribal people, these corporate houses, impose a kind of exploitation, as a result of which Santhal and Mundas and others, they revolted several times. They revolted. These are the real problems of the tribal people. Independent India gave emphasis on preservation of the rich and distinct culture of the tribal people. After independence, ब्रिटिश तो टी मर्चेंट्स को दे दिया अंदर, उसके लिए क्या क्या नहीं हो गया. तो बोला कि इनको उनके कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया गेव एम्फोसिस ऑन प्रिजर्वेशन. उनके आर्ट, उनके आर्किटेक्चर, उनका कल्चर, उनका फूड, उनके हैबिटेशन, उनके clothing, everything, their culture, their dance, their songs needs to be preserved. होना चाहिए, होना चाहिए. Preservation. Some thinkers observe that there may be two approaches to tribal development. There could be two approaches. Autonomy, the tribal people were to live alone
and let them stay as they were. उनको छोड़ दीजिए, वो अपने तरीके से जिए. Let them give autonomy. Let them live their independent life. Some say no integration. Harmonize them completely with the Indian culture. उनको भी इंग्लिश पढ़ दीजिए, उनको भी इंग्लिश ड्रेस पहनने दीजिए, उनको भी अंग्रेजी गाना तो गाते ही है, खूब अंग्रेजी गाना गाते हैं. Let them be anglicized. Let them be Indianized. Something. There are two. Should it be autonomy? Should they be integrated? मैं क्या हूं? बंगाली हूं, यूपी के हूं, उड़िया हूं, तेलुगु हूं, क्या हूं? अच्छा, कितना कितना ये वो जो कौन सा एक हॉकी का फिल्म नहीं हुआ था, चक दे इंडिया. ठीक है, मैं इंडियन हूं. अब क्या बोलूं, मैं इतनी स्टेट्स के साथ इतनी सालों का ताल्लुक है, अब क्या बोलूं, मैं इंडियन ही हूं. सो आगे बढ़े. This integration in autonomy is the question which often comes. घुमा फिरा के सोशियोलॉजी में भी आएगा, जनरल स्टडीज में भी आएगा. बिना ट्राइब में इंडियन फीचर्स क्या होगा? इंडियन सोसाइटी के फीचर्स बिना ट्राइब में कैसे हो सकता है? पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू completely rejected both the approaches. He said, क्या rubbish, integration, autonomy, ये सब क्या है? To him, it is insulting when they are left alone and isolated from the outside world. The second approach of Nehru believes was a path leading to the loss of their social and cultural identity. Pehla, in the name of autonomy, it is simply insulting that leave them alone. To keep them isolated is simply insulting. And this one is, or culture is lost. Completely when you get integrated, your dance, your song, your clothings, your festivals, you lose everything. सारा इंग्लिश हो जाएगा. तो क्या है? पंडित नेहरू इज पंडित नेहरू. ही गेव पंचशील. उनके हर बातों में एक पंचशील आ जाती थी. 5 नीति उन्होंने बताए थे. बहुत सुंदर नीति है. देखते हैं उनके 5 principles. What are the 5 principles he talked about? चलो, पंडित जी firmly believed in unity in diversity. डाइवर्सिटी होगा, यूनिटी भी होगी. पंडित जी believed in unity in diversity and talked about 5 principles. उन्होंने 5 नीति बताए थे, 5 पॉलिसीज बताए थे. क्या है? पंडित नेहरू 5 पॉलिसी याद रह जाएगा. हटाता हूं. मुझे आज कहा गया है बच्चों को लिखने का थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा. मैंने बोला हाँ दूंगा. जल्दी जल्दी नहीं हटाना, या तो डिक्टेशन देना. मैंने बोला नहीं हटाऊंगा. एंड ये ना इंटीग्रेशन ऑटोनॉमी मैं 250 वर्ड में बनाया है, और आप और भी शॉर्ट करके इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी कहते ही यू विल divided into 2 parts. Northeast, issue of autonomy. The central zone, issue of poverty. They got already integrated. उनकी प्रॉब्लम है पॉवर्टी, इनकी प्रॉब्लम है दे डिमांड फॉर अ हिल स्टेट एंड ऑटोनॉमी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नो imposition from outside. The 5 principles are
Don't impose. Don't impose anything. Don't impose your food. Don't impose your clothing. Don't impose your education. Don't impose your knowledge. They have enough knowledge of their own. Gentlemen, they have enough knowledge of their own. उनको भोला भाला समझने की कोई जरूरत नहीं है. उनको कब क्रिश्चियन बनना है, कब हिंदू वापस लौटना है, उनको बहुत अच्छी तरह बता. मैं उस बात की जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पे, ठीक है. और वो सेंट्रल जोन तुम्हारा झारखंड भी आता है ना. उसका ही जिक्र करेंगे. ये अमूमन यही नैरेटिव है, लोग यही मानते हैं, यही यकीन करते हैं कि भोला भाला है, अरे तुमसे ज्यादा शातिर है. चलो देखते हैं. देयर लैंड एंड फॉरेस्ट राइट शुड बी रेस्पेक्टेड. एनकरेज ट्राइबल लैंग्वेज. एक नागालैंड में 20 लैंग्वेज है, एंड 20 लैंग्वेज कंपेयर्ड टुगेदर, one लैंग्वेज है नागामीज. In administration, reliance should place on the tribal people. बाहर से अंग्रेज बैठा मत दो, ताई वाला. Preference should be given that a collector should be tribal, who understands that. उनके सेक्रेटरीज वेक्टरीज हो सके तो, मुमकिन हो तो उनको दो. Development should be through their own social and cultural institutions. अपना सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन शुड बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिसाइड द मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस ट्राइबल पीपल, बी इट इन सेंट्रल जोन, बी इट इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन, बी इट इन आइलैंडर जोन, southern or islander zone. First one, don't impose. Second one, respect their land and forest right. Third one, encourage their language. Fourth one, administration should be done by them. And the fifth one, their institutions should be entrusted with the responsibility of their डेवलपमेंट. ठीक है. पांच नीति क्या क्या है? नंबर 1, नो इम्पोजिशन फ्रॉम आउटसाइड. नंबर 2, रेस्पेक्ट लैंड एंड फॉरेस्ट राइट. थर्ड, रेस्पेक्ट देयर लैंग्वेज. फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेशन बाय देमसेल्व्स. एंड फिफ्थ, देयर ओन इंस्टीट्यूशंस टू गो फॉर देयर डेवलपमेंट. ठीक है. सिक्स्थ शेड्यूल. दिस इज द शेड्यूल फॉर द नॉर्थ ईस्ट. क्या है? आई नॉर्मली डोंट ट्राई टू ब्रिंग इट, बट ट्राइबल में बिना लाए नहीं होगा. दिस इज इनर लाइन परमिट. नोबडी कैन बाय और सेल लैंड इन 7 states, 7 sisters: Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal, Assam and Meghalaya. आसाम अभी वहां से निकल गया, वहां पे तुम, लेकिन आसाम के वो एरियाज में नहीं कर सकते हैं. A self the tribal people by making a provision of creation of autonomous district council and regional councils. त्रिपुरा में एक उनका काउंसिल, वो जो बोडोलैंड काउंसिल, दार्जिलिंग में गोरखा काउंसिल, अपनी अपनी उनका काउंसिल बना के वो लोग ऑटोनॉमी उनको दिया गया. गोरखा काउंसिल तो इतना ज्यादा हो गया था, गोरखालैंड मूवमेंट, तो वो बोले दूसरे गाड़ी को घुसने नहीं देंगे, हमें टैक्स दो. अल्टीमेटली बोला बाबा शांत हो जा, तेरा काउंसिल तेरा है, तेरा इनकम तेरा है, तेरा खर्चा तेरा है, हमें जितना जितना देना है टैक्स हम तुम्हें दे देंगे, अभी शांति है. सेम इज द बोडोलैंड, सेम इज द त्रिपुरा. टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है? तो ऑटोनॉमी ऑफ द रीजनल काउंसिल्स. Inner line permit system was introduced for the tribes of Northeast. This is for the central, this is for the Northeast. Oh, मैंने इनर लाइन परमिट समझा दिया. दैट टू एंटर देयर यू हैव टू टेक वन इनर लाइन परमिट. वो कागज लो, लेके फिर तवांग जाओ. वहां पे जमीन वमीन तो खरीद ही नहीं सकते, वो अपनी है.
वहां पे एक लड़का था, मैंने उसको बोला तू इधर आ, बोले कि नहीं, आई विल डू पिग बिजनेस, विल सेंड पिग फ्रॉम हियर टू यूपी, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। एक एक पिग 30-40 में बेच बिकता है वहां पे। पिग इज देयर मेन फूड। मेरे को खिलाया नहीं है, तेरे साथ जाऊंगा तो खाऊंगा, नौकरी पहले पा जा। द पीपल ऑफ द हिल्स ऑफ द then composite state of Assam felt that provision of the sixth schedule is not enough for their development. But this is not enough. They were the composite state of Assam. Nahin? So they said, no, sixth schedule provision is not enough for our development. This Assam people, Assamese people are exploiting us. These tea merchants of Assam are simply exploiting us. They are imposing their Assamese language on us. They are not only exploiting, they are destroying our culture, they are destroying our language, they are destroying our administration, they are destroying our total heritage. They prepared memorandum that were completely different from the people from their plane. they अपना एक बनाए, बोला कि आसाम के जो तराई के लोग हैं, प्लेन्स के लोग हैं, उनसे हम अलग हैं, हमारी कुछ मांग और है, आसाम से हमें हटाओ। Then came a demand for Garo Khasi Jayantiya. Then came a demand for Ziling Sumi and Nagamis. Then came a demand for Lusai Hills. Then came a demand for Lungloi Hills. Like this, each hill wanted to become a state. सब हिल अपनी अपनी मांगे रखी, डिमांड्स रखे कि ये आसाम हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, दिस स्टेट। जैसा झारखंड ने कभी कहा था, माइंस आर आवर्स, पटना इज बेनिफिटिंग। नहीं नहीं बोला था, बोला था। जैसा तेलंगाना बोला था, तेलंगाना क्या बोला, अरे everything is our water and their plains, they are fertile, हमारा पानी उधर विशाखापट्टनम चला जाता है और हमारे यहाँ करीमनगर ये वो सब रुखा सूखा पड़ गया है। बिजली रामागुंडम पे, प्लांट रामागुंडम पे, और बाकी सब वो लोग खा रहे हैं, कोस्टल आंध्र खा रहा है। They shouted and they got a separate state. Similarly, Meghalaya shouted, they got a state. It highlighted Assamese were making every effort to impose their language by introducing bill in the assembly. The memorandum by Garo Khasi Jayantiya listed a number of advantages of having a hill state. बोला देखो, एक हिल स्टेट देने से हिंदुस्तान को नुकसान नहीं हो जाएगा, हम हिंदुस्तान से बाहर जाके खालिस्तान नहीं बन जाएंगे, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। ओनली थिंग इज दैट यू गिव अस लिटिल बिट ऑफ more autonomy remaining within Assam. We are unable to keep our culture and heritage intact. They are imposing, एक बिल ला रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में to make Assamese as the language. हटाओ इसको। फिर Meghalaya, Manipur, Tripura, and subsequently Mizoram and Arunachal Pradesh states were formed. मोटा मोटी इतना याद रखो, Assam was exploiting. They made presentation saying that these hill states should have separate identity and let them be made a separate state which will be beneficial for the country. And the Prime Minister agreed every time, and new states were formed. Like Punjab and Himachal were together. Himachal said,
We are different from Punjab. We are fully hill state. Make us a different state. But otherwise, Punjabi language and Himachali language are the same. Their food is the same. Their clothing are the same. Only thing is that geographical terrain was different. So they become a separate state. Jharkhand become a separate state. Telangana become a separate state. Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, they become separate states. सवाल आती है रीजनलिज्म पे. Regionalism is assertive or destructive. If we talk on regionalism, we will talk of international regionalism and we will also talk of domestic regionalism. Then the picture will be clear. If I talk of domestic regionalism, someone may say, why? But BRICS countries, SARC countries will say, yes, countries should we be dominated by European countries? Let there be South Asian some region. Let there be BRICS countries, let there be SARC countries, let there be NATO countries, let there be oil exporting countries like this. But when it takes a violent turn, when they adopt violence, regionalism is dangerous. Like Khalistan. Khalistan was suppressed by Mrs. Gandhi along with a trusted lieutenant as a governor, Siddharth Shankar Ray. He was the chief minister of West Bengal. He was made as a governor. बोला जाओ खालिस्तान जाओ, पंजाब जाओ, गवर्नर बनो. केपीएस गिल को साथ लिया. प्रिंसिपल एक ही था, नक्सलाइट्स को जैसे सीपीएम को बंद किया था इन वेस्ट बंगाल, द सेम प्रिंसिपल. आफ्टर सनसेट, if anybody above 18 years, boys and girls sin, shoot at sight. खालिस्तानी मूवमेंट करते फिर जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले क्या क्या हुआ गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. Meghalaya, Manipur, Tripura, and subsequently Mizoram and Arunachal Pradesh states were formed. Autonomy of Darjeeling Hill Council, Tripura tribal areas, autonomous district council has yielded good results. So, motamoti integration and autonomy issue with the central zone is poverty, and northeast is their own demand for the autonomous states. A large part of the fifth schedule areas is coterminous with presence of Maoists. छत्तीसगढ़ में, छिंदवाड़ा में और क्या क्या जगह है, Mao. Way back in 87, the kind of situation that I had observed, it was a thinking in my mind. उस समय माओ नहीं था, हम माओ बाओ नहीं जानते थे. मेरे मन में यह है, ये लोग हथियार क्यों नहीं उठाते हैं, क्यों इतना बर्दाश्त करते हैं. 2000 में 2002 में जब पहली बार देयर वाज अ अपराइजिंग लाइक दिस, मेरे मुंह से निकला ये तो था, ये माओइज्म नहीं, ये तो गरीबी भूखमरी के खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं. और कैसे आवाज उठाएंगे? हर कोई तो महात्मा गांधी नहीं है ना. गुब्बारा लेके रघुपति राघव राजा राम करते जाएंगे ना. हर कोई तो नहीं है ना. नेताजी सुभाष भी है. गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसे भी तो लोग हैं ना. बच्चे तोड़फोड़ नहीं करते हैं, बाप जब नहीं सुनता है. ये भी वही है. They have been subjected to systematic deprivation of natural resources, poverty and economic underdevelopment. मैंने कहा पकड़ी बड़वाई दी चट्टी बरिया तू, यहां पे थीएस माइंस का 27 साल की पुरानी कॉन्ट्रैक्ट was cancelled and Triveni engineering was called in and it bulldozed everything. People revolted. They were fired. 5 people died that particular day. And the tribals
got scared and they left. आज कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर का काम कर रहे होंगे, कितने लड़ेंगे हुकूमत के खिलाफ? बहुत ज्यादा लड़ा नहीं जा सकता है, डर जाते हैं। मासूम बच्चा है, वाइफ है, कितना लड़ेगा? बिरसा मुंडा बहुत कम पैदा होते हैं, भगत सिंह कम पैदा होते हैं, लोग डर जाते हैं। मैं बहुत डरपोक हूं, मैं डरता हूं, चाहते हुए भी बोल नहीं पाता हूं। This phenomena of Maoist presence has been understood mainly through two dominant narratives. क्या? The state, it is an issue of law and order. State क्या बोलता है? ये Maoist is a law and order issue. Maoist क्या बोलता है? Socio-economic demands of the local communities. We are not creating law and order issue. It is the issue of demand, socio-economic demand. We are asking for our literacy. We are asking for our livelihood. We are asking for our light. We are asking for garbage disposal. We are asking for our rights on the forests. इसको लॉ एंड ऑर्डर मत बोलो, कुछ भी मांगने से लॉ एंड ऑर्डर और ऐसा मत कर दो, माओइस्ट ब्रांड मत करो। स्टेट बोलता है नहीं, यू हैव टू फॉलो द लॉ। अगर मांग है, चुनाव जीत के विधानसभा में आओ, चुनाव जीत के संसद में आओ, वहीं पे मांग करो, अपना मेजॉरिटी बना के आना पड़ेगा। अरे भाई, इतना आसान थोड़े ना है। क्या पीछे जल्दी। स्टेट बोलेगा लॉ एंड ऑर्डर, माओ बोलेगा कौन सही है? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार बोलता है माओइस्ट क्यों बोलते हैं, गरीबी है, पर वो बोलता है नहीं। अब क्या है, माओ कह के ब्रांडिंग करके एक बार माओवादी टुकड़े टुकड़े ऐसा बोल दो, बस हो गया, लोग वही मानेंगे, हाँ ये सब माओवादी है, टुकड़े टुकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Dominance of these two narratives means that never both the issues are addressed together. एक बोलता है तुम सत्य में आग्रह रख के नॉन वायलेंट वे में संसद जाके पहुंचो, संभव नहीं। बोलता है हम हमारे 2 रोटी मांग रहे हैं, जंगल के ऊपर अपनी हक मांग रहे हैं। बोला नहीं, तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम गुंडे हो। This raises a question about good governance. स्टेट का ये मांग और लोगों की ये मांग, इसके लेके इट इज नथिंग बट अ इशू ऑफ गुड गवर्नेंस। डेवलपमेंट, माइनिंग, फॉरेस्ट, हाँ एक ही लाइन तो था। इसको तो कम से कम खत्म कर दूं, नहीं तो मुझे बोलेगा तुम स्लो कर। कोई आबर फिर बोलता है तुम जल्दी जा रहे हो। कल करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग इन डाइवर्सिटी। और उसके बाद है पॉपुलेशन, बड़ा मजेदार चीज है, वो रोजमर्रा का इशू है। चलो आगे बढ़ते हैं। Development, mining, forest management, etc. has aggravated deprivation in terms of land alienation, lack of autonomy, and multiple exploitation. He knows about mining, is the biggest issue in Jharkhand. And this Adivasis says, हमें क्या मिलना है?
पकड़ी बड़वाहटी की, वो बोले हमारा जंगल ले लोगे, हम क्या करेंगे तुम्हारे माइनिंग में, मैं तो इंजीनियर हूं नहीं, मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ठेकेदार के पास मजदूर बनूंगा, कम से कम मैं अपना रोजी रोटी तो ऐसे निकाल रहा था। जंगल में बहुत खजाना है, लकड़ी है, महुआ है, जैकफ्रूट है, आम है, शहद है, मधुमक्खी का छत्ता है, बहुत कुछ है, और तुम मुझे तो मजदूर बना दोगे, मेरा जंगल मत लो। Maoists who claim to represent the local communities are often seen imposing their authoritarian dictates over these communities. माओइस्ट जो कहते हैं कि हम लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कभी कभी लोग ना चाहते हुए भी उनको जबरदस्ती माओ बनाते हैं। जैसे वो चंबल के डकायत पकड़ के लेके बोलते तू आजा डकायत बन जा, तो ना चाहते हुए भी चंबल के डकायत बन जाते हैं। मेरे श्रीलंकन फ्रेंड पुगेंद्र ने कहा, वो भास्कर उसका नाम क्या था, एलटीटी, पूरा जबरदस्ती यंग बच्चों को लेके वो एलटीटी बना देता है। तो एक दिन तो जाना ही था, लोकल मास बेस खत्म हो रहा था, एलटीटी का मास बेस खत्म हो रहा था, ये सब ये का। एज ए रिजल्ट माओइज्म वाज लूजिंग इट्स होल्ड। दो दे क्लेम्ड हम तुम्हारे नुमाइंदे हैं, बट उन पे वो जुल्म चलाता था, दबाव डालता था, प्रेशर डालता था, ये हमारे साथ आ जाओ, अरे लड़कियों को भेज, हमारे साथ हथियार उठाएंगे। कौन अपना लड़की को भेजना चाहता है? फुसला फसला के या तो जबरन लेके चले जाते थे, और अल्टीमेटली हाथ में हथियार दे और घुमाने की मौका मिले तो एड्रेनलिन रश होता ही है ना। These state-led initiatives and the Maoist movement are both instruments in sustaining the conflict and alienation of the local communities. Perhaps, क्या टाइम पे खत्म हो रहा है? Perhaps governance issue is related to autonomy can be a better solution. Hey, my suggestion is last. Perhaps autonomy can be a better solution. What you said. Perhaps autonomy is the best solution. Those who are administrators, they may think in a different way, but I think in this way. Perhaps वो जब बोडो काउंसिल बनाया, जब गोरखा काउंसिल बनाया, जब हिल काउंसिल बनाते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया चलता है, तो उनको ऑटोनॉमी दो और तुम फैसिलिटेटेड करो, उससे बढ़िया होगा, खराब नहीं होगा। So today what we talked about, definitional problem of the scheduled tribes, branding them as scheduled because their names were in the table is not good. Nevertheless, defining is very difficult because there is a variety of scheduled tribe based on hills, based on plains, based on meadows, based on water. मुश्किल है. Then we talked about इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी तो बाद में आया. हाँ, ट्राइबल पॉलिसी, द ट्राइबल पॉलिसी रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल पॉलिसी रिलेटेड टू सदर्न जोन, सेंट्रल जोन. ट्राइबल पॉलिसी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज इनर लाइन परमिट एंड ऑटोनॉमी, सेंट्रल जोन में एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी, ये हुआ. उसके बाद इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी में issue of integration was with the central zone, autonomy was with the northeastern zone. उसमें हम पंडित नेहरू के पंचशील नीति डिस्कस करके फाइनली perhaps autonomy will make a better development. So we discussed today. We will meet tomorrow. We'll talk about diversity, unity. बाकी subsequently चलेगा.